আধুনিক জীৱনশৈলীত মানৱ সভ্যতাত মানৱৰ বিকাশৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন ৰোগৰ উপদ্ৰৱ হোৱা হৈছে। বিভিন্ন কাৰণত ৰোগসমূহ দেখা দিয়ে। লাইফষ্টাইল কওক বা খাদ্যাভ্যাস কওক, যিকোনো কাৰণতে যিকোনো অসুখ হ'ব পাৰে আৰু তাৰ বাবে ঠিক তেনেধৰণে চিকিৎসা বিজ্ঞানো আগুৱাই আহিছে। আৰু আমাৰ লগত বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে যদি আমি চাওঁ যে 20 শতিকাৰ পিছত লিভাৰৰ সমস্যা, বিশেষকৈ লিভাৰ চিৰ'চিছ, বিভিন্ন কাৰণত লিভাৰ চিৰ'চিছ হয়। আৰু এই লিভাৰ চিৰ'চিছৰ কাৰণ আৰু কি ধৰণে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি বা সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে আমাৰ মাজত কথা পতাৰ বাবে আমাৰ লগত আছে যশোদা হস্পিটেলৰ, হায়দৰাবাদ স্থিত প্ৰখ্যাত হস্পিটেল যশোদা ছুপাৰ হস্পিটেলিটিৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ KS সোমাশেখৰ ৰাও। নমস্কাৰ। ৰাও চাবৰ পৰা প্ৰথমতে আমি যিহেতু অসমীয়াৰ লগতে আমি তেওঁক প্ৰশ্ন অসমীয়াত উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু উত্তৰসমূহ আমি মূলতঃ হিন্দী বা ইংৰাজীৰ পৰা বিচাৰিম। প্ৰথম পিছলে তেওঁ বহুদিন ধৰি অসমত আহি আছে, প্ৰায় বিগত 8 মাহ ধৰি, আৰু তেওঁ এতিয়া অসমৰ কি ধৰণৰ আজিকালি কিহৰ কাৰণে লিভাৰৰ অসুখ হোৱা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ। पिछले 8 महीने से अब सब महीने एक बार आते हैं, सप्ताह के लास्ट 3 दिन में, 4th वीक में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो असम के लोगों के बीच काफ़ी लीवर का प्रॉब्लम है। ये लीवर का मतलब जो लीवर का डिजीज हो रहा है, इसका वजह क्या है असम के लोगों के बीच? मोस्टली हम जो देख रहे फैटी लिवर डिसीज़ ज़्यादा दिखाई दे रहे और अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। Fatty liver disease and alcoholic liver disease are the most common causes of liver diseases all over the world, and हमें असम में भी वही दिखाई दे रहे, ज़्यादा फैटी लिवर के वजह से लिवर डैमेज और अल्कोहल ज़्यादा पीने से लिवर डैमेज ज़्यादा दिखाई दे रहे असम में भी। तो इसका हाउ इट जो बेसिकली लिवर सिरोसिस और किस तरह से बिसाइड फूड, फैटी लिवर ड्यू टू फूड, किस टाइप की फूड? फैटी लिवर मोस्ट ऑफ द टाइम लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करने से और ज़्यादा फैट का फूड, ऑयली चीज़, फैटी फूड, एक्सेस अमाउंट ऑफ राइस खाने के वजह से और एक्सरसाइज नहीं करने से ये फैटी लिवर ज़्यादा दिखाई दे रहे। मेन, फीमेल्स और यंग पीपल में भी हमें फैटी लिवर दिखाई दे रहे। एक्सेसिव फैटी फूड्स, एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियन और ज़्यादा चीज़, बटर, ये सब चीज़ें बाहर का खाना ज़्यादा हो गया, उसके वजह से हमने ज़्यादा फैटी लिवर देख रहे हैं अभी। तो फैटी लिवर के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? सी बेसिकली फैटी लिवर ज़्यादा अगर हम सिटी लोगों को या कोई भी सिटी में हम रैंडमली चेक करेंगे तो 30% को हम फैटी लिवर देख रहे हैं एक्चुअली। हर एक अल्ट्रासाउंड जब भी हम करते हैं उसमें फैटी लिवर दिखाई दे रहे, बट जो लोग को फैटी लिवर है सब लोगों को प्रोग्रेस होने का चांसेस नहीं है, बट इनमें से 30% फैटी लिवर है, इनमें से मिनिमम 50% को धीरे धीरे लिवर डिसीज़ प्रोग्रेस होने का चांसेस है। ये लिवर डिसीज़ इनिशियली फैट डिपॉजिट हो जाता, उसके बाद ये फैट जो है लिवर के ऊपर, लिवर के हर एक सेल को डैमेज कर लेते, इसको हम बोलते स्टीयोटोसिस और स्टीयोटोहेपेटाइटिस। स्टीयोटोहेपेटाइटिस है जब ये फैट जो लिवर के ऊपर जमा हो गया वो लिवर सेल्स को धीरे धीरे डैमेज कर लेते। जब ये डैमेज ज़्यादा दिन डैमेज कंटिन्यूसली होता तब ये क्या होता, वो लिवर को धीरे धीरे स्टिफ बना देते। स्टिफ बोले तो लिवर को फाइब्रोसिस बना देते। लिवर को जब फाइब्रोसिस बना देते ये धीरे धीरे सिरोसिस को चले जाने का चांसेस है। सो ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, इनिशियली फैटी लिवर, उसके बाद स्टीयोटोहेपेटाइटिस, उसके बाद फाइब्रोसिस और उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर। जब सिरोसिस हो जाता वो लास्ट स्टेज ऑफ लिवर डिसीज बोलते हैं। सो सिरोसिस कैसे हो जाते हैं? हाउ लिवर सिरोसिस, हाउ अल्कोहल से भी लिवर सिरोसिस होते हैं? तो अल्कोहल से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से too much alcohol is also dangerous and that cause to liver cirrhosis also. अल्कोहल रेगुलरली जो अल्कोहल ले रहे, जो लोग अल्कोहल रेगुलरली लेते जाते
वो 5 साल के बाद उनका लिवर के ऊपर डेफिनेटली 90% में फैट डिपॉजिट हो जाता, और ये अल्कोहल और कंटिन्यू करने से लिवर को फाइब्रोसिस और सिरोसिस होने का चांसेस है। फैटी लिवर, अल्कोहलिक लिवर डिसीज और कुछ कारण होगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी बोल के, ये सब के कारण लिवर को फाइब्रोसिस और उसके बाद सिरोसिस होने का चांसेस है। तो मतलब आपको कितने अप टू व्हाट स्टेजेस जो एक आदमी रिकवरी हो सकता है, किस तरह से हो सकता है? वॉट एवर मे बी द कॉज ऑफ लिवर डैमेज, इनिशियल स्टेजेस में जब हम पकड़ जाते, तो इफ इट इज अल्कोहलिक लिवर डिसीज और इफ इट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज or if it is because of hepatitis B or hepatitis C, if we are able to diagnose the disease before it goes into F3 or F4 fibrosis, so अगर हमने ये टाइम पे हमें पकड़ लिए तो उसका इलाज बराबर करके, अगर if it is because of alcohol, we ask them to completely stop alcohol, give some medications for regeneration of the liver, or if it is because of fatty liver, we can ask them to give some, we will give some medications and ask them to change their lifestyle. So खाने में फ़र्क बताना, एक्सरसाइज करना, ये सब करने से वो रिवर्स होने का चांसेस है। सेम है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। If at all we find out hepatitis B and hepatitis C is the cause for liver damage, we treat hepatitis B and hepatitis C with antiviral medications, and we will be able to reverse them if they are in the early stage of liver damage. सो बेसिकली एट व्हाट स्टेज और क्या सिम्टम्स देखने में लोग इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, और आप कब कब अवेलेबल होते हैं? स्पेशली जो काफ़ी देखे हम लोग, गुवाहाटी हो, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, असम के लोगों को भी लिवर का डिजीज है, तो ये किस स्टेज दिखाई देने से कोई भी हमें ही और सी शुड रश immediately to doctors for consult? Yeah, most importantly, we are talking about a cirrhosis of liver which can be a irreversible stage. Early stage of cirrhosis can be reversible at some point of time, but most of the time, unfortunately, liver disease is a silent killer. Initial stages when the liver is progressing into cirrhosis, or when it is in the stage of fibrosis, people may not have any symptoms. Unfortunately, very rarely people can complain of tiredness, weakness. Some people who are taking alcohol can have yellowish discoloration of eyes, or we call it as jaundice. ये पीलापन दिखाई दे रहे तो definitely immediately you have to attend a doctor or a gastroenterologist or hepatologist. और नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, रेगुलरली हमें शुगर है या नहीं है वो हम शुगर टेस्ट करके चेक कर लेते। वैसे सब लोग हर साल में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट एक टेस्ट करना चाहिए, LFT एक ब्लड टेस्ट करना चाहिए। लिवर फंक्शन टेस्ट है SGOT, SGPT बोल के 2 एंजाइम्स रहता, अगर वो बढ़ के है तो डेफिनेटली वो इमीडिएटली हेपेटोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा। So whatever may be the reason, it can be because of fat, it can be because of alcohol, it can be because of hepatitis viruses, the SGOT and SGPT will be abnormally high. It can be elevated than normal. This is when we have to evaluate our liver health. आप कब अवेलेबल होता है असम में? So I am available every 4th Friday, Saturday and Sunday. Every month, 4th Friday, Saturday and Sunday, I am available in Guwahati and everywhere in Assam. सो बेसिकली आप ये भी बता रहे, जैसे मान लीजिए सिरोसिस, और जो एक बात आता है जो एडवांस स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? सी एडवांस स्टेज ऑफ सिरोसिस, उसको हम और एक बोलते हैं डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस बोल के। डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस बोले तो सिरोसिस के वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखाई दे रहे उसको डीकॉम्पेंसेटेड स्टेज बोलते। उसमें हो सकता ईसोफेजियल वैरिसेस, ब्लड वेजल्स जो फूड पाइप में है वो सूजन हो जाता, दे स्वेल इनटू एंड वी कॉल इट एज ईसोफेजियल वैरिसेस। दिस ईसोफेजियल वैरिसेस कैन रप्चर and cause blood vomiting or black color motion, काला रंग में मोशन हो सकता और ब्लड वॉमिटिंग भी हो सकता, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। और लिवर स्टिफ होने के वजह से देर इज ए ब्लड वेजल विच गोज इनटू द लिवर कॉल्ड पोर्टल वेन, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता एंड वी सी लॉट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेटिंग इन द एब्डोमेन, वी कॉल इट एज एसाइटिस, पेट फुल हो जाना, this is called ascites. It is a complication. This infection, there can be some infection in this fluid called spontaneous bacterial peritonitis. There can be problems to the kidneys because of the liver disease and we call it as hepatorenal syndrome.
And the most important complication what we see is disorientation. Disorientation is people will become drowsy, they will be sleepless, and sometimes they can go into coma because of liver diseases. इसको हम बोलते हैं hepatic encephalopathy. So these are all complications of advanced liver diseases, and these are the symptoms where we have to immediately go into a medical attention, because all these things can be life threatening issues. Are there any stages and before liver damage, before it's going to cirrhosis? Yeah, definitely initial stages. For example, when we are talking about alcoholic liver disease most of the time from the normal liver it goes in 90% there will be fatty liver, and in 10 to 15% there is something called severe alcoholic hepatitis. That means these patients will have jaundice, generalized weakness, tiredness and all those things. And if not treated properly, severe alcoholic hepatitis can cause a life danger in up to 60% of people. In this other 90% who has this fatty liver, if they continue to take alcohol, initially the liver goes into a stage called fibrosis, where there is little stiffening of the liver. Over a period of time, this fibrosis progresses from F1 fibrosis to F4 fibrosis, where we call it as cirrhosis of liver. Similarly, in any other cause of liver disease like fatty liver disease or hepatitis B or hepatitis C, आपको से सिरोसिस ये रिवर्सिबल है, उसको ठीक करना मतलब कर सकता है, कैसे हो सकता है? इनिशियल स्टेजेस ऑफ F3 F4 फाइब्रोसिस और अर्ली सिरोसिस जो बोलते हैं हम, वहाँ से रिवर्स करने का चांसेस है, बट वो स्टेज में आइडेंटिफाई करना चैलेंज होगा. वो अभी जो फाइब्रो स्कैन ये सब पहले नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से लिवर कम्प्लीटली डैमेज होने तक हमें पता नहीं लगता था लिवर डैमेज हो गया बोल के, बट अभी वो नया स्कैन है फाइब्रो स्कैन स्पेशली लिवर के लिए. दिस फाइब्रो स्कैन इज स्पेसिफिकली मेड फॉर ओनली लिवर, जिससे हम F1 F2 F3 F4 फाइब्रोसिस को क्लियरली हम डायग्नोस कर सकते. जब हम अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस में F3 फाइब्रोसिस में डायग्नोस कर लिए तो रिवर्स करने का चांसेस ज़्यादा है. तो अर्ली डायग्नोसिस इज ऑलवेज ए चैलेंज. With the advent of fibroscan at this point of time, we will be able to make early diagnosis, but people should come voluntarily to check their livers. So people who are having long-term diabetes, they are at risk for fatty liver disease. People who are obese, they are risk for fatty liver disease. People who are taking alcohol regularly for more than 5 years, they are risk for liver disease. So all these people should come at an early stage to check themselves for this fibrosis, and if we can identify them at that point, definitely cirrhosis is also a reversible disease. स्टेडियम का शोर हो या घर की शांति, भरोसा और मजबूती दोनों है जरूरी. टॉप सेम सीमेंट, मजबूती का भरोसा हमेशा. So fatty liver, most of the people in Assam and Northeast, even throughout the world, is a very common disease. And is it dangerous, fatty liver? Definitely, fatty liver is dangerous because 50% of the people who have fatty liver, over a period of time, it may not happen immediately, तुरंत नहीं होगा, but in next 5 to 7 years, these people will progress to fibrosis, and in next 10 years, these people can progress to cirrhosis of liver. So cirrhosis is a end stage of बिना alcohol. Without taking alcohol, even तो उसका नाम हमने दे दिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज. जिन लोगों ने कभी भी अल्कोहल नहीं छूते, वो जस्ट बिकॉज ऑफ फैट, एक्सेसिव फैट और लेस एक्सरसाइज, फैट डिपॉजिट होके लिवर डैमेज होने का चांसेस रहता. सो फैटी लिवर इज डेंजरस. It's dangerous. So how one should treat fatty liver? Fatty liver, most of the time, abhi we have some medications also, but more than medications, most of the time fatty liver is reversible by changing the dietary habits, by changing your lifestyle. Exercise, regular exercise of minimum 45 minutes per day. It should be a brisk walking or jogging, or it can be swimming, or it can be cycling. This exercise should be done every day to reverse fatty liver.
avoid deep fried oily foods and avoid red meat, avoid cheese and outside foods. Definitely fatty liver is a reversible phenomena. Even if you identify fatty liver at F3 fibrosis, we will be able to reverse fatty liver to normal liver when lifestyle modifications are followed. We have new medications also which are available to help in reversing along with the lifestyle. So how your hospital, Yashoda Super Specialty Hospital, is equipped to handle these all things? Yashoda Hospital, High Tech City, is a 2000 bedded hospital where we have every instruments and all types of specialities, where we are doing multiple investigations. We will be able to treat our patients from early stages of liver diseases. Even when they have end stage liver disease, we will do liver transplantations. Wherever required, we can do a liver transplantation. Most of the time our aim will be to avoid all these things. We try to reverse the disease at this initial point of time. But if some people who are progressing to end stage liver disease, we may have to do liver transplantation in these people. So at Hyderabad, Yashoda hospitals, we have already completed 800 liver transplants successfully, and we are equipped to do 2 types of liver transplantations. So successful liver transplantation. So basically then, so what are the most common causes of liver damage, so that people may identify before going for last stage like liver cirrhosis or transplant? As I mentioned, worldwide and everywhere in India, even in Assam, I would say number 1 is non-alcoholic fatty liver disease or fatty liver. Second thing would be alcoholic liver disease, where there is excess amount of alcohol consumption, and rarely we are seeing hepatitis B and hepatitis C infections also, which are causing liver diseases. So to prevent liver diseases, my suggestion is everyone should get themselves checked for a liver function test, hepatitis B and hepatitis C, and a ultrasound abdomen at least once in a year. If at all we find any abnormalities in these blood tests, we will have to go to our next test called fibroscan. If at all fibroscan is showing any fibrosis, we have to identify the cause and try to treat the cause. There are other rare causes of liver diseases like autoimmune hepatitis, Wilson's disease, which are very rare. We see in less than 5% of cases. If we don't find any reason in this, we will have to evaluate them for these problems. And any disease, if identified, can be treated and reversed. Very rarely we will see patients who have already passed the gone into advanced stages of liver disease. For them, definitely we may have to do a liver transplantation. So basically, what are the treatment options for decomposed cirrhosis? Decompensated liver cirrhosis, most of the time initially we manage them with medical management, and we will be monitoring them closely with a scoring system called MELD sodium scoring system. If the MELD scoring system is more than 15, this patient is going towards a liver transplantation. If we are able to manage them and bring their MELD sodium score to less than 15, we will be managing them with a medical management. It can be diuretics when there is lot of fluid. We will do endoscopy and variceal banding in patients who has bleeding. We will be treating them with for anti-encephalopathy measures when they have severe drowsiness and all. But when these problems are recurring, and if the MELD sodium score is increasing, we will have to list them for transplantation. So basically, liver transplant is a we know most of the people that, but what are the types of liver transplant? So basically, in liver transplantation, we have 2 types. First one, we call it as deceased donor liver transplantation, where we will be, if the patient requires liver transplantation, we will be registering them for a deceased donor. When we have a matching blood group and similar weight in a brain dead patient, we will be taking that liver and transplanting to a patient who requires liver transplantation. The second type, which is mostly done, is a live related donor. That means if someone has a liver disease, cirrhosis, and requiring liver transplantation, anyone in the family, first degree relatives, will be identified
preferably with the same blood group, and we will have to match them for the weight. So if I require a liver transplantation and I am 70 kgs weight, I would require at least 700 grams of liver. So someone who is donating also should match nearer to my weight, and so that I can have, our normal liver will be somewhere around 1500 grams. So if I have to get a liver donor from my family, they should be able to give me at least 700 grams of liver. So we will take all these criteria, we will check the donor is healthy, and then we can take half of their livers, and the surgery for the donor is definitely safe, and the liver, which is half of the liver which is taken from the donor, will regenerate into normal liver in 3 to 4 months. So there is a fear. Basically, during donation, there is a fear that the donor might be has some problem or something. So with the advanced procedures, with the advanced techniques, and we have a lot of experience. With this experience, what I can say is donor hepatectomy is, that means whenever we are taking a liver from a donor, it is at this point of time it is as simple as any laparoscopic cholecystectomy or any laparoscopic surgery. Actually, the safety for the donor is 99.9%, like any other surgeries. So there is no need to be hesitant or no need to have any doubts about the donor safety at all. And before taking the donor into consideration, we will check their age and all other systems are normal or not. Then only we will take for donation, and it is the safest surgery available with this much of experience. So how India is progressed in last 2 decades in liver transplant? Yeah, in India the first liver transplantation happened somewhere in 1999, and to tell you the safety of liver transplantation, the patient who has undergone liver transplantation in 99 is still happy, healthy, and doing his day-to-day activities, number one. So liver transplantation is the safest procedure, and we have evolved a lot in the last 25 years that today liver transplantation is the safest surgery available, and all high volume centers wherever we are doing more than 10 to 12 transplantations per month, the success rates have reached more than 95%. So whenever we do a liver transplantation in a good time, the timing of transplantation plays a very important role. Patient should not be very sick when we are doing a transplantation. That is where your MELD sodium score comes. When you do a transplantation, when the MELD sodium score in your patient is between 15 to 20, the success rates would be somewhere around 95%. And with the evolved techniques and experience, liver transplantation is a very successful procedure at this point in India. So basically, the basic root cause of liver damage. So people should come out and they should take precaution, and they should first of all people যে মানুহে জীৱনশৈলী সলনি কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ খোৱাৰ যিবোৰ ধৰণে ফাষ্ট ফুড হওক বা বিভিন্ন জাংক ফুড তাৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে, আৰু তাৰপিছতো যদি কিবা ধৰণৰ শংকা হয়, যিকোনো মনত যদি প্ৰশ্ন উদয় হয় যে মোৰ লিভাৰৰ অসুখ হৈছে নেকি বা এয়া হৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কোনোবা এজন গেষ্ট্ৰএণ্ট্ৰলজিষ্টক বা হেপাটলজিষ্টৰ ওচৰত কনচাল্ট কৰিব লাগে। আমি বৰ্তমান কথা পাতি আছোঁ ডক্টৰ K.S. সোমাশেখৰ ৰাও, আৰু তেওঁ প্ৰতি মাহে বিশেষকৈ মাহৰ চতুৰ্থ সপ্তাহটোৰ শুক্ৰ, শনি আৰু দেওবাৰে তেওঁ উপস্থিত থাকে অসমত, আৰু তেওঁ খালি গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয়, ইয়াৰ উপৰিও কেতিয়াবা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নগাঁৱতো যায়, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে শ্বিলঙতো গৈছে, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিহেতু ইয়াত উপলব্ধ, আৰু তেওঁ লগত और लास्ट मैं प्रश्न এটা সুধিম যে पिछले 8 महीने से आप आ रहा है, अभी असम का लगभग कितना पेशेंट आप देख रहे हैं? शायद हर महीने में 70 to 80 पेशेंट्स, कभी कभी 100 पेशेंट्स भी हो रहे, सो मे बी समवेयर अराउंड 1000 पेशेंट्स अभी तक तो देख चुका हूँ यहीं पे गौहती में, बट हैदराबाद में भी हम पेशेंट्स असम का पेशेंट्स देखते रहते, सो शायद 1500 पेशेंट्स अभी तक देख चुका हूँ। सो उसका लोग का खुद पेशेंट लोग ज़्यादा बता पाएंगे, फिर भी हाउ दे आर हैप्पी विथ योर
Yeah, I think people are happy with me because I am seeing them again and again. Sometimes I have a lot of follow up all these days. ये जो लिवर का प्रॉब्लम्स जो है हमने रिजल्ट्स भी देखा है वो फाइब्रोसिस से रिवर्स होना, जिन लोगों को अल्कोहल के वजह से प्रॉब्लम हो रहे वो स्टॉप करके वो भी लिवर प्रॉब्लम्स रिवर्स होते जा रहे. सो या आई थिंक दे आर हैप्पी. ধন্যবাদ. এয়া আছিল ডক্টৰ কে এছ সোমেশ্বৰ ৰাও.